Yeah, actually, so we started recording, and so first thing is how to be able to search, which is you can type an instrument here. You can search stocks, futures, forex, crypto, indices, bonds, and economy. So you can search, for example, Nifty here. Check the flag. So if the flag is of Indian, if it is an Indian flag, that means it's an Indian stock. For example, if you type Reliance here, right? If you type Reliance here, you will see that there are Reliance is listed across. There are many companies called Reliance mutual funds. It's on NSE, it's on BSE. Anything which contains the name, which has a name Reliance in it, will pop up here because you are looking at all instruments which are called Reliance across the globe. So you'll see some of the instruments are listed on London Stock Exchange, which is Reliance Infrastructure. It's a GDR, so probably they've raised funds outside. There are some instruments which are listed. An Indian company can list its instrument or financial securities outside India also. And here is the example. Now there is a company called Reliance Steel and Aluminium Company. I don't think it belongs to the Reliance Group, but it's a separate company which shares the name Reliance, and it is listed on NYSE. Then you have the Reliance, the one we know. So we have Reliance Industries, you have Reliance in Insurance Mutual Fund, you have Reliance Infrastructure. So to figure out which company you are looking at, look at the exchange where you are, uh, you are fine. You want the exchange that you want to refer to for prices. Now today, uh, there is interoperability, meaning you can buy on NSE and sell on BSE, and it will not be considered as a short selling or it will not cause you any penalty. So you can buy here and you can sell here, or you can buy on BSE and without even a thought of it that which exchange you bought, you can sell it on NSE. So this is known as interoperability. It will not cause lead to short selling or something like that, or no penalty. Earlier we were very concerned which stock exchange is listed. Have we sold on the right stock exchange? Earlier, if you had bought on NSE, you were supposed to sell it on NSE. If you had bought it on BSE, you Mhm. must sell it on BSE. But there is interoperability. Is this point clear to everyone? What is interoperability? Yeah. It is also possible during the day you want, because you don't want Reliance coming up from NYSE during the day, during the market hours. So you can put a filter here. You can remove all the filters, and I'll show you how to put the filter. So you can say India. Here you go. You say India. You don't want all instruments. You want stocks only, which are also known as common stocks. This you will learn common stock, preferred stock in your securities market class, and sectors also you can put. So obviously it is from oil and gas, but who has got time to figure that out during the market hours? So you'll put this to all sectors. Just filter this as India and common stocks. Put Reliance, and you'll have lesser noise, lesser search parameters or search results coming in. Easier to choose. So set your stocks to India during the search, during the live market. Then you can search for any funds. Again, which fund, which category. Futures, you'll be talking about in the options class, whether it is Reliance futures. If Reliance has a derivative product built on it, you'll see the future prices. Here you can see the future prices, but you will not be able to see the option prices. So derivative has two components. One is futures and second one is options. TradingView, as of now, does not give you options data. If you want options data, you'll have to go to platforms like Zerodha, Dhan, stocks, etc., etc. So as of now, it does not offer you this platform of options. You can also search indices. For example, now this is Israel. I will simply remove this. I can put India here. All the index or all the indices which are there, right? Reliance is not an indice, so I'll have to remove this. Leave it blank here, and you will see that NSE, uh, Bank Nifty,
So ever you are searching for an index, you can go here. If you are searching for a bond product, fixed income security, you learn in the basic stock markets classes talk about securities market operations. So you can search bonds here. This is of United States 10-year government bond. So what is a bond? What does it mean? All of this you learn in the classes that will be part of it. And if you need any economy related data, so I can search India GDP, for example. This comes from, I think, World Bank. So you can look at India GDP and you can plot it. So it's a very nice sort of data, and it's almost 3.3 year. And if you look at the growth here, for example, the way India is growing, just between 2015 and uh, this is the number, yeah, 3.38 something. We have grown 84%. In fact, we almost like doubled. We were the 10th largest economy in the world. Now we're the fifth largest. You can search. So when we do the economics class here, when we do the fundamental analysis class, you learn all of this. Okay. Okay. So we'll move from the search function now. So now I'll go to the stocks. Rather, I'll simply stick to all because I may have to show you different data points, and I will stick to Nifty. Nifty, for example, because I want you to have a good hold over Nifty. Nifty represents the mood of the market. Nifty represents the market sentiment. Nifty represents the India growth story. So I really want you to pick up Nifty before we move on to any other. All right, so here we are. चलिए आगे बढ़ते हैं. Dark mode, you know how to do this. So you'll have to click on the top left and click on the dark mode here. And this will give you the dark mode thing. So click on the top left and the dark. How to set the time frames? So initially what you may see on your screen is something like this. Because I'm also recording this for your benefit, I will simply remove everything how it looks. So you may have something like this set on your screen. This is how you can set the different time frames. So go to the D thing here, click on the D that you see on your screen. Click here. You can click on 5 minutes. These are the essential ones you'll need as of now. 1 hour, daily, and 1 week. Which time frames are important for which indicators? For stocks, which time frame may be important? That all will come later. So right now, no trading strategies on the stocks right now. Just how to operate the tool. So once you have set this tool here, and you would also need a monthly time frame. So once you have done this, you have a ribbon. Have you interesting till this point in time? Yes, so yeah. Yes. So once we are, I think we can move forward. Good. So then, which candlesticks are we going to learn here or pick up? So let me bring this to you. So you can click on these. Again, you'll see something like this. Something like here. I'll remove the favorites, so you'll know how it looks on your screen. Do you see something like this here on the screen? Just the candles, maybe? Yeah. Yes. Yeah. So if you click here, आप देखो कैंडल्स पे आपने क्लिक कर दिया है. ठीक है ना. अब थोड़ा मैं इंग्लिश करता हूँ, थोड़ी इजी हो जाएगी. सो कैंडल्स पे आपने क्लिक किया. एक और क्लिक करना है, वो है हैकिन एशी और हाइकिन एशी, हाउएवर जैसे भी आप प्रोनाउंस करें इसको. सो यू हैव दो हो गए. एक तो कैंडल हो गया और एक हाइकिन एशी हो गया. जब भी कंफ्यूजन हो निफ्टी में या किसी भी स्टॉक प्राइस में या किसी भी एसेट क्लास में, तो आपको दो देखना है, कैंडल्स और आपको हाइकिन एशी देखना है.
ये मैं आपको कब पढ़ना सिखाऊंगा, जब टेक्निकल एनालिसिस के डेप्थ में अपन एंट्री लेंगे तब। अभी आप सिर्फ ये सीख रहे हो, तो आपके फेवरेट बार्स में जब आप मार्क करोगे, सो व्हाट विल हैपन, यू विल सी इट ऑन द रिबन। ठीक है, इतना रंगनाथ जी, दिस काइंड ऑफ इंग्लिश इज आई थिंक सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक, एंड यू Oh, I got it. स्पीक वेरी फाइन इंग्लिश, सो अब तो बहुत अच्छा लिखते हो यार, सो यू राइट वेरी नाइस। ओके, गुड गुड। सो आइए थोड़े अकाउंट्स ऊपर जो टैब्स खुले हैं, आई क्लोज इट, वेरी नाइस, दिस विल रिमूव सम। अच्छा, मैंने बुक्स भेजा है आप लोगों को ग्रुप में, और नहीं मिला होगा तो मैं फिर से भेज दूंगा, है ना, इक्विटी डेरिवेटिव्स का, ठीक है। जी सर। हाँ, उसको आपको Okay, पढ़ना sir. है, एंड यू कैन ऑल्सो क्लियर द NISM एग्जाम, सो इफ यू नीड एनी सपोर्ट, मैं आपको NISM एग्जाम जो है आपको मदद करा, ठीक है। ओके। अच्छा, गुड, चलिए तो मैं आपको, मैं ग्रुप पे भी भेज देता हूँ आपको, ओके। और आप हिंदी में बात कीजिए बिल्कुल, है ना रंगना जी, ये मैं इंग्लिश में बात करने का मतलब नहीं है कि आपको हिंदी में, आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है ना, ठीक है, ये आपकी जी जी। क्लास है, एकदम बिंदास। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल आपकी आज़ादी, बिकॉज ये आपका क्लास है। मैं एक सिर्फ माध्यम हूँ, आई एम ओनली अ मीडियम हियर। इंडिकेटर्स हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, तो इंडिकेटर्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये देखिए, एक इंडिकेटर टेम्पलेट है जो मैं आपको आगे लगाना सिखाऊंगा, विच वन मेक सेंस, इसमें कौन सा सेंस बनता है नहीं बनता है, तो ये सब मैं अभी इंडिकेटर्स वगैरह बात के लिए सीखूंगा। अलर्ट आप लगाना सीखोगे, ठीक है। अब कोई एक स्टॉक पिकअप कर लेते हैं अभी, ठीक है, चलेगा। कैन आई पिकअप अ स्टॉक, जी इन्फोसिस। सर। अमृता, अमृता, इज इट ओके Yeah, अगर, है ना। yeah, yeah, sir. No issues. चलिए अभी अलर्ट्स लगाएंगे, सो आई विल क्लिक ऑन अलर्ट। अलर्ट मैंने क्लिक कर दिया है, ये देखिए, परफेक्ट आ गया अलर्ट आपका। अलर्ट पे आप क्लिक कर लो, और यहाँ जो है आपको लगाना है कि अगर इन्फोसिस क्रॉस कर रहा है, मान लीजिए क्रॉसिंग द प्राइस, अगर 1500 का प्राइस क्रॉस कर रहा है, तो मैं अलर्ट लगाना चाहता हूँ, आई वांट टू नो। अभी हर बार आपको अलर्ट चाहिए या बार बार अलर्ट चाहिए, तो आई थिंक वन टाइम अलर्ट इज ओके, बिकॉज क्या होगा, इफ यू पुट एवरी टाइम, सो इट गोज टू 1501, देन इट फॉल्स टू 1500, यू विल गेट एन अलर्ट, फिर इट गोज टू 1499, अगेन इज गोज टू 1500, तो बहुत ज़्यादा अलर्ट्स आते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक ही बार अलर्ट लगाइए, ठीक है। बट एक बार अलर्ट लगाने का मतलब है कि आपको फिर से अलर्ट लगाना पड़ेगा, सो समटाइम्स वी पुट एवरी टाइम, बट आपको थोड़ा फिर बॉदर ज़्यादा करेगा, सो यू हैव टू चेक। आप अलर्ट का नाम डाल सकते हो, इन्फी एट 1500, ये आप डाल सकते हो, एंड यू कैन सिंपली क्रिएट दिस अलर्ट। कब तक ये एक्टिव रहेगा, इसको आपको अगर डिटेल्स जानना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक, यू हैव टू क्लिक हियर। वंस यू क्लिक हियर, ये देखिए, दिख रही है क्या, सिमिलर घड़ी जैसा दिख रहा है आपको, जी सर। गुड। तो अगर ये घड़ी जैसा दिख रहा है, इफ यू सी दिस क्लॉक थिंग, आपको, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, समथिंग विल पॉप आउट, ठीक, ये हो गया। अब मैं आपको इस पे जरा सा क्लिक कर दिया मैंने सेटिंग्स पे, एंड इसकी वैलिडिटी आप देखो कहाँ तक है, अगस्त 19, ऑलमोस्ट अ मंथ। मैं डेट भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ गया, मैं बोलूँगा आप मुझे सितंबर, 2 महीने लगाने दे रहा है, 2 months यू कैन पुट, 2 months यू कैन पुट, इट डज, इफ यू हैव अ प्रीमियम अकाउंट इट विल अलाउ यू इवन मोर। सबसे जो महंगा वाला अकाउंट है, द मोस्ट प्रीमियम वन, यू आर अलाउड टू पुट इट फॉर like an unlimited period, it will never expire, but for the kind of account I have, जो अकाउंट मेरे पास है उसमें मैं 2 महीने आगे का लगा सकता हूँ। चलिए हो गया, अब इसको मैं हाइड करता हूँ, तो क्या होगा, एक देखिए ऊपर डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, जी सर। अमिता, कैन यू सी दिस, Yeah, yeah, sir. दैट्स एन अलर्ट विच इज सेट, Okay. ठीक है। अभी मैं आपको अलग अलग टाइप के अलर्ट सिखाऊंगा, नॉट राइट नाउ बिकॉज वी आर नॉट देयर, एंड यू कैन ऑल्सो मूव दिस अलर्ट, सी, कैन यू सी दिस, Mm-hmm. आई कैन मूव इट द अलर्ट हियर, सो अभी प्राइस पॉइंट जो है चेंज हो गया है ना, इट हैज चेंज्ड, ओके। नेम इज इन्फी एट 1500, सो अगर इफ यू वांट टू चेंज द अलर्ट, ऑब्वियसली आप इसका नाम इन्फी नहीं रखना चाहेंगे एट 1500, यू कैन सिंपली से इन्फी इन्फी अलर्ट,
ठीक है क्या? Yeah, okay, sir. सो यू कैन मूव इट फ्रॉम हियर। गुड, ये अगर आपने देख लिया, अब आइए आते हैं रीप्ले बटन पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ है ये रीप्ले बटन? तो ये बटन नंबर जो है, दिस इज बटन, तो इनको नंबर्स कर देते हैं। सर्च फंक्शन इज नंबर 1। देन ये जो बॉक्स है पूरा, ये टाइम फ्रेम है, जिसको आप देखोगे। मैं जब क्लास कंडक्ट करता, जब मैं आपसे व्हाट्सएप में चैट करता हूँ, आई कॉल दिस इज TF। दिस इज बॉक्स नंबर 2। कैंडल स्टिक जो है वो बॉक्स नंबर 3 आपने सीखा अभी। इंडिकेटर्स बॉक्स नंबर 4 है। वी विल कम टू इट बिकॉज बहुत डिटेल्ड है, तो अभी नहीं हैंडल कर सकते। टेम्पलेट्स, जो इंडिकेटर के टेम्पलेट्स इन बिल्ट मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं बने हुए फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू, सो दैट इज नंबर 5। ठीक है, अब हम आते हैं और 6, ये 5 हो गया है ना। उसके बाद 5th तक आपने देख लिया। उसके बाद 6th और 7th जो है, 6th और 7th, दिस इज 6th अलर्ट आपने सीखा। द 7th बॉक्स इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू लर्न। ओके, Yes. चलिए तो आइए Okay, इसको sir. देख लेते हैं। एंड आई विल क्लिक ऑन द रिप्ले बटन। मुझे यहाँ से चाहिए, सपोज आई वांट टू सी फ्रॉम हियर। तो आपने ये देख लिया रिप्ले बटन। अब आप इसको, मैं रिप्ले कर रहा हूँ, और एज इफ लाइव मार्केट है, और आप इसके स्पीड को स्लो भी कर सकते हो। सो यू कैन मेक इट हाफ अ स्पीड, यू कैन वॉच दिस। आई इनकरेज यू टू डू, क्योंकि इससे आप काफ़ी सारे इंडिकेटर्स टेस्ट कर सकते हो। यू कैन सेट योर ओन स्पीड और यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑल्सो। इससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती। So we have seen this for many hours, replayed and seen, replayed and seen. This is like back testing, so you should do this. Replay clear है क्या? Can you put on your screen and also let me know that it is working for you? Yes, sir. Yes, sir. काम कर रहा है रंगनाथ I जी? think I. जी सर जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप बहुत जल्दी सीखोगे। आप लर्नर हो रंगनाथ, थैंक यू सर, थैंक यू। जल्दी आप सीखोगे, मुझे पूरा भरोसा है। और आप जब एक दो बार ऑफिस में आ जाओगे ना, तो और भी आपको मजा आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट मंथ में है सर मीटिंग्स कंपनीज की, तो हाँ। मैं ट्राई करूँगा। अच्छा, आपका बिजनेस क्या है? सर मैंने अभी जस्ट जॉब लेफ्ट कर दिया है, तो Okay. अभी मैं ट्रेडिंग का बिजनेस करता हूँ सर, ब्रिकेट्स के ट्रेडिंग का। ब्रिकेट्स आप ट्रेडिंग का, कौन सा स्टील के ब्रिकेट्स हैं, क्या है? नहीं, ब्रिकेट्स जो कंपनी बॉयलर के लिए यूज किए जाते हैं एज अ अच्छा, फ्यूल बोलते हैं, हाँ, बायोमास। फ्यूल ब्रिकेट्स। गुड, ठीक। अब आइए रिप्ले। अमृता, इज इट वर्किंग फॉर यू? So I यस सर। need to. I've not paid for the subscription yet, so I don't think so. This option I have अच्छा, for तो now. मैं आपको बताता हूँ। द प्रॉब्लम इज बिकॉज एज यू ग्रो this thing, as you are older in the system, in the sense, some of our Mm-hmm. members are able to do Yeah. this free of cost, though they have Okay. not a paid account. Most of them are able to do this free of cost, even though they do not have a paid account. I think they just allow you after some number of days or some months as such. Okay, so if you're not able to Alright. do it, don't worry, but sooner or Mm-hmm. later you will have this, because most of our members have this access. Okay, Okay. Okay, sir. good. So there is this replay button we have seen. Then you can whatever templates you put, kindly rename it. It will be unnamed right now. Okay. Please put this to auto save, rename and put your name. You can put your initials. So you can put, for example, Amrita, or you can put Ranganath Vaji. Okay. So what all options you have to enable? Auto save. Put a name to your this thing template. So where? I mean, I'm not able to understand this Understood. part. Okay. Do you see this? Okay. Do you see this kind of a thing here? Unnamed करके आ रहा होगा आपका. Do you see unnamed? Where exactly? I mean. Okay. Where replay point number 1. Okay, replay, and it's not working, so I don't think so. ठीक. No, can you locate the button replay there?
replay पे, are you there at the button? I mean, are you looking at that button? Then I can ask you where to look. Yeah, Then to the right yeah, of it, after the box, square box, do you see? unnamed. Yeah, unnamed. Right. हाँ, I so got it. rename it. आप उसको rename करो. Put your name. So आपको पता चल जाएगा कि yes, this is your template. Every time जब आप देखते हो तो आपको दिखेगा कि रंगनाथ जी आप भी कर लेंगे Oh, जरा. कर हो गया सर, मेरा कर लिया। अरे परफेक्ट, रीनेम कर लिया आपने, है ना. जी सर। यहाँ पर एक सर्च बॉक्स है, क्विक सर्च है. कुछ भी मुझे सर्च करना है, कोई टूल सर्च करना है, RSI है या कुछ भी मुझे जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना है. वैसे मैं आपको शॉर्टकट्स वगैरह याद दिला दूंगा. इफ यू वांट टू सर्च एनी इंडिकेटर, एनी टूल हियर, एनी ड्राइंग टूल, सो लॉगरिथमिक है या फिर यू वांट टू ड्राइंग टूल, रिमूव ड्राइंग्स, कोई भी फंक्शन जो है आप सर्च करना चाहते हो. कौन से फंक्शंस? द फंक्शंस विच आर अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ये सारे फंक्शंस कहाँ से आ रहे हैं सर्च? तो ये जो फंक्शन है, यू कैन सर्च हियर यूजिंग दिस वन. सो इफ आई वांट टू मेजर, फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मेजर करना है तो आई कैन, आई थिंक ड्राइंग टूल्स सिर्फ इससे ही उठा रहा है, सो इट इज नॉट पिकिंग अप दिस वन. लार्जली ये जो आप ड्राइंग टूल्स आप देख रहे हो या फंक्शंस, आप ये जो देख रहे हो और इधर जो देख रहे हो, दैट ऑल्सो, एंड दिस इज गेटिंग अपडेटेड एवरी टाइम. सी रेक्टेंगल भी आ गया, so this also is coming. You can search, quick search करना है अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स सर्च करना है, but it is not picking up this function. तो यहाँ तक है basically, and you can also see where you can see icon भी नहीं आ रहा. So only drawing tools that you need for trading purpose, largely this one. So from here to here it is search. ठीक है, इसका उतना यूज नहीं होता है, so I won't elaborate much. अभी आ जाइए सेटिंग्स पे. ठीक है, सेटिंग्स पे आ जाइए. Are we on the setting thing? yes, sir. Now all these should be marked. If it is already marked, then no worries. Most of it would be auto by default marked. तो आप ये देख लो, is it marked? Let me know once it is done. सर ये ऑलरेडी हमारे सर, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने के ना? नहीं, कुछ चेंजेस करने, जो ऑलरेडी होना चाहिए. अगर है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं. Yes, sir. Okay. Done. इसके बाद आइए, I'll scroll down after this one. ये सब आपको मैं बाद में बताऊंगा, all of this. Also put adjust for different data. Can you put this please? Time zone should be Kolkata and precision should be default. How do you choose Kolkata here? Simply scroll down to UTC plus 530 and choose Kolkata. So you can scroll using a mouse and you have to choose Kolkata. आपको चुनना है. कोई भी सेटिंग जो है ऑलरेडी है उसको चेंज मत कीजिए, सिर्फ सिमिलर होना चाहिए. ये करिए. रंगना जी हो गया क्या? जस्ट सेकंड ना. हाँ सर, हो गया. सर जो लास्ट में आपने जो ऑप्शन बोला है ना, एडजस्ट वाला, एडजस्ट डेटा वाला, हाँ. वो ऑप्शन मेरे इसमें नहीं दिखाई दे रहा है. आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट? इन्फोसिस खुला है क्या पीछे? रिलायंस खुला है क्या? स्टॉक पीछे क्या खुला है? चार्ट क्या है? निफ्टी सर, जस्ट सेकंड ना, मैं ओपन कर दूं. इसलिए नहीं आ रहा है. निफ्टी पे डिविडेंड नहीं है ना, इसलिए. हाँ ठीक है, बस सर. आप इन्फोसिस करो पीछे, आप देखो आता है क्या? जी आ गया सर, थैंक यू. समझ गया आप? जी सर. Good. So problem itself becomes a solution. Amrita, is it done? Have you understood what we were trying to talk? Yes, sir. If you type Nifty here, because Nifty pe there is no dividend, it's a basket, right? So you would not see this as adjust for dividend. But moment I move to stocks, they distribute profits via dividend. है ना? Dividend is what? A share in the profits. है ना? प्रॉफिट में से निकाल के दिया हुआ आपको. सो इफ अगर नेट प्रॉफिट ये है
और उसमें से इफ यू डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर आपने कुछ टुकड़ा बांट दिया है एज डिविडेंड, तो वो स्टॉक्स पे होता है, डिविडेंड पे कोई निफ्टी पे या बैंक इंडेक्स पे कभी भी डिविडेंड नहीं आता। ठीक है, चलिए ये हो गया पक्का। कैन आई टेक इट फॉर यस? यस सर, Yeah. यस। Yes. गुड। स्टेटस लाइन में आ जाइए। ये देख लीजिए, सब होगा बाय डिफॉल्ट होगा, बट जस्ट चेक, सब बाय डिफॉल्ट होगा। है क्या? हाँ No, सर, I वैल्यू need to पे क्लिक see. नहीं है, वैल्यू पे नहीं करना है ना। वैल्यू पे क्लिक करना है ना, मेरा किया हुआ देखिए। आप मेरा So स्क्रीन can देख you लो। scroll up once? यस, सी लोगो, टाइटल, OHLC वैल्यूज, बार चेंज वैल्यूज, टाइटल्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड वैल्यूज। Yeah. डन। और बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड इज समथिंग लाइक दिस। अगर आप बैकग्राउंड को स्क्रॉल करोगे, सो इट विल एडजस्ट योर ब्राइटनेस और इट विल मेक इट डार्कर। ठीक है, हाउ ओपेक यू वांट द बैकग्राउंड। ओके, स्केल्स पे आ जाइए। ठीक है, सिंबल नेम आप डाल सकते हो, बट इट बिकम्स टू मच ओवरलैपिंग, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिंबल नेम आप मत रखो, बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू सी एन इंडिकेटर और रीड हियर, और फिर इन्फी अगर लिखा है ना तो इट विल ओवरलैप हो जाता है, पढ़ने में मुश्किल हो जाता है, बहुत दिक्कत होती, तकलीफ होती है। सो डोंट हैव टू मेनी नेम्स हियर। सिंबल नेम हटा दिया मैंने। ऑल यू नीड इज सिंबल लास्ट प्राइस। ठीक है, प्री पोस्ट मार्केट प्राइस चाहिए, हाई एंड लो प्राइस चाहिए। ठीक, लो प्राइस, ओके गॉट इट। ये चाहिए मुझे। इंडिकेटर और फाइनेंशियल नेम अभी नहीं चाहिए, समटाइम्स आई नीड इट, समटाइम्स। वो कब है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपको नहीं चाहिए। टू मेनी रीडिंग्स या टू मेनी नेम्स ऑन दिस साइड प्राइस स्केल पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सो डोंट हैव टू मेनी नेम्स हियर और टू मेनी इंडिकेटर्स, रीडिंग्स या वट एवर डिस्क्रिप्शंस, ये सब नहीं होना चाहिए। सो आई रिमूव दिस एज ऑफ नाउ, आई डोंट वांट दिस। ये आपने कर लिया। जी सर। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जो नाम आता है एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करना चाहिए। दिस इज बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। डोंट लॉक द प्राइस टू बार रेशियो, बाद में आपको सिखाऊंगा, इट इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट इफ यू डूइंग दिस। ठीक है, यस सर। डोंट लॉक द प्राइस टू बार रेशियो। डेज ऑफ वीक्स ऑन लेवल should be marked, date format and time hour, 24 hour होना चाहिए, this is important। यस सर। Done। यस सर। अमृता, going fast, Just a going sec. slow, ठीक है, pace is okay। Yeah, it's fine, sir. Thank you। और रंगना जी ठीक है, स्पीड ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। जी जी सर। कैनवस पे आते हैं, ये भी बहुत फास्ट फास्ट चेंज हो रहे हैं, नाम बदल रहे हैं ये भी। सो कैनवस पे आ जाइए। बैकग्राउंड ग्रेडियंट, यू कैन चूज द ग्रेडियंट, डार्क आप कर सकते हो, कैन चूज, है ना। वैसे डार्क कलर चुना है आपने तो दिस बिकम्स एब्सोल्युटली डार्क, दिस बिकम्स एब्सोल्युटली डार्क। चूज अ कलर व्हिच इज कंफर्टेबल टू योर आईज। बहुत ज़्यादा फैंसी कलर नहीं होना चाहिए, you'll get lost, don't have too much fancy, just the subtle color, light color, lighter to your eyes को hurt नहीं होना चाहिए। So this kind grid lines, you can have grid lines like this, but these become too much into the eyes, तो ऐसी जो आंखों को चुभे मत कीजिए, that's something that hurts your eyes, don't have this kind of line। ये नॉनसेंस है और इसमें कोई साइंस नहीं है इतनी लाइंस होने का, it has got no use। क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर है ये जो आप एरो देखते हो, क्रॉस हेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट शुड बी ब्राइट इन कलर ताकि आपको दिखे। दिस इज क्रॉस हेयर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर मार्क होना चाहिए, सो यू कैन रीड दिस, सो क्लिक अ वाटर मार्क। नहीं तो क्या होगा, आप सोच रहे होगे निफ्टी के बारे में और आपके स्क्रीन पे लगा होगा इन्फोसिस, आप ऑर्डर पंच करोगे इन्फोसिस का और सोच रहे होगे आप निफ्टी या बैंक निफ्टी का, सो यू नीड द text in the back, watermark in the back। ठीक है, and you can choose the opacity, कितना dark कितना light चाहिए। बाकी सब default setting है।
कितना जगह छोड़ना ऊपर, ये सब डिफॉल्ट है। 10% ऊपर, 8% नीचे, राइट में कितना छोड़ना है, दीज आर डिफॉल्ट सेटिंग्स। आपका कैनवस जो है, सो टॉप से कितना छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है, बॉटम से कितना छोड़ना है, डिफॉल्ट सेटिंग। पॉइंट इज क्लियर Yes, sir. लेडीज एंड जेंटलमैन? Yes, sir. Yes, sir. गुड। आइए अब ट्रेडिंग पे आते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग पे आ जाइए। और यहाँ पर मैंने अभी कुछ नहीं क्लिक किया हुआ है, बाद में रीजन बताऊंगा। वंस यू इंटीग्रेट दिस विथ धन, you can use this. Generally you'll see that buy and sell button is clicked, but it takes some space और ये confusion create करता है। आप मत करना इसको, क्योंकि आप यहाँ पर कई बार कैंडल्स होते हैं, आप पढ़ नहीं पाओगे। सो इसको हटा दीजिए प्लीज, सिंपली रिमूव इट, डोंट नीड दिस। सो एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो दिस इज ब्लैंक, ये ब्लैंक है ना, सिंपल है ये। ठीक है, Yes, sir. नया है। गुड, ओके। आइए इवेंट्स देख लें। ओके, आइडियाज ऑन चार्ट्स चलेगा, डिविडेंड्स ऑन चार्ट्स एसेंशियल है, स्प्लिट्स ऑन चार्ट, अर्निंग्स ऑन चार्ट, इसको कॉर्पोरेट इवेंट बोलते हैं। और ये सब आप पढ़ोगे, दिस इज नोन एज कॉर्पोरेट इवेंट। ये आपके सिक्योरिटीज मार्केट क्लास में, ठीक है ना। और लेटेस्ट न्यूज एंड माइंड्स, समझ गए क्या? Yes, क्लियर sir. है? और एक बार ट्रेडिंग पे आइए ना प्लीज सर। हाँ, मैं आता हूँ, एक मिनट, ये देख लीजिए पहले एक बार। इसको बोलते ठीक हैं है, कॉर्पोरेट एक्शन। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट एक्शन। एक्शन। कोई भी डिविडेंड आया, बोनस आया, स्प्लिट आया, इसका कैलेंडर भी होता है एडवांस में, और इसकी फाइलिंग भी करनी पड़ती है ना। एक्सचेंज को बताना पड़ता है कि वी आर डिक्लेयरिंग डिविडेंड्स, वी आर गोइंग फॉर स्प्लिट, और वी आर देयर इज एन अर्निंग व्हिच इज कमिंग। ये सब एक्सचेंज को बताना पड़ता है। दिस विल हैंडल इन द अर्निंग्स। अमृता, इज दिस क्लियर? Yeah, so few options I don't have. Is it because I Because don't it know? is, maybe you have a new account, or because it is a free account, any of those two options. But don't worry, All you right. always have my account to, I can always send you something. And Sure, sir. इसके बावजूद भी there is nothing that will stop Mm-hmm. you from making money. That is my promise. Okay, you will still have all the data points from one or the other source. So नहीं है तो कोई चिंता नहीं। Okay, sir. ट्रेडिंग, रंगनाथ जी आपके लिए ट्रेडिंग क्लीन रखिए। ओके सर, बढ़िया सर, थैंक यू। जब आपका, आप लोगों का धन का अकाउंट है क्या, धन या फायर्स? धन का प्रोसेस के लिए डाला है सर, एक एरर आया है उसमें बैंक स्टेटमेंट का, वो भी आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो आता है। अमृता, हाउ अबाउट यू, धन या फायर्स? No, none of them, sir. विल यू For ओपन now. दिस? आप अकाउंट खोलोगे? Yeah, sir. क्योंकि आपके If जो भी it's needed. लिमिटेशन, हाँ, इफ ऑल द लिमिटेशंस ऑफ द, यू नो, कि फ्री है तो आई डोंट हैव इट, यू विल गेट इट ऑन धन फ्री ऑफ कॉस्ट। Okay, sir. And even if you don't keep any money if you don't require to keep it. Maybe they'll charge Mm-hmm. some $300 as an AMC, but Okay. it is better to pay 300 rupees and get all the paid features of TradingView, rather than paying 18,000 to 25,000 per annum to TradingView and then having access to all these features. समझ गए आप? ओके So, Okay, और sir. जितने आपके पेड फीचर्स है ना रघुनाथ जी, वो सब जी, धन फायर्स इन सब में फ्री हो जाते हैं। ठीक है सर, ट्रेडिंग यूज जैसे, के। हाँ, ट्रेडिंग व्यू के, जैसे कि सबसे बड़ा फीचर जो है, जो सबसे यूजफुल है, जो आपको रोज लगेगा, वो है हाँ, स्प्लिटिंग द स्क्रीन। Mm-hmm. आपको एक साइड निफ्टी देखना है, दूसरे साइड रिलायंस देखना है। कैसे आप देखोगे? है नहीं तो, ठीक है ना। जी तो इधर मैंने निफ्टी लगा दिया, अब मैं इधर रिलायंस लगा सकता हूँ। ये फीचर आप करोगे नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, डबल टैप खोलना पड़ेगा। डबल टैप कैसे खोलना पड़ता है? तो मैं ऊपर गया, मैंने डुप्लीकेट क्रिएट कर दिया, दूसरा आ गया। आपने देखा कैसे मैंने किया? सी दिस, जी राइट क्लिक ऑन द टैब, टॉप मोस्ट टैब, एंड से डुप्लीकेट। डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद अब आपको यहाँ पर निफ्टी देखना पड़ेगा, यहाँ पर इन्फोसिस देखना पड़ेगा। नॉट वेरी यूजफुल। या लैपटॉप पे आप देखोगे, मोबाइल पे आप देखोगे, सो यू नीड टू स्क्रीन, बट हियर यू कैन एटलीस्ट स्प्लिट टू, और आप 4 में भी स्प्लिट कर सकते। समझ गए? यस सर। वेरी नाइस। यू ऑलरेडी गाइस आर सो स्मार्ट यार, वेरी नाइस। चलिए, तो कहाँ तक पहुंचे हम लोग जर्नी में? सो प्लीज ओपन अ धन और अ फायर्स अकाउंट, एंड
एनी वन विच यू लाइक। ठीक है, तो हम यहाँ आ गए थे सेटिंग्स में, एंड इवेंट्स आपने देख लिया है। ठीक है, इसके बाद वेन एवर यू सेंड यू कैन गो टू अ फुल स्क्रीन मोड बाय हिटिंग ऑन दिस बटन। यू कैन गो ऑन अ फुल स्क्रीन मोड। दिख रहा है आपको? And then you can always take a screenshot. So just give me 1 second. I think I'll reshare. आपको थोड़ा easy हो जाएगा। ये देखिए, ठीक। And if you don't see any writing on the wall, please remind me, okay? Because I have to change the settings. अब ये देखिए, full screen mode. Can you see this? Yes. Very nice. Yeah. और full screen से अगर निकलना है, how do you escape out of the full screen? So you can hit the escape button. ठीक है, ये आ गया, हो गया, सिंपल। अभी आप कैमरा देख रहे हो, यू कैन डाउनलोड द इमेज विच यू कैन ओपन, यू कैन शेयर, आ गया। सो कैमरा बटन से यू कैन शेयर कर सकते हो, आप इमेज को आप कॉपी कर सकते हो, आप मुझे भेज सकते हो। यू कैन कॉपी द लिंक एंड यू कैन शेयर, और यू कैन ओपन द इमेज इन अ न्यू टैब। ठीक है, और आप ट्वीट भी कर सकते हो, बहुत अच्छा है। डोंट राइट एनी रिकमेंडेशंस, क्योंकि क्या है, सेबी की नज़र है सबके ऊपर। थिंक बिफोर यू राइट एनी रिकमेंडेशन, एंड आई कैन ट्वीट दिस इमेज। So are you able to perform all these 4 actions? Download the image, copy the image, copy the link, open in new tab, and tweet image. कर पा रहे हो क्या आप? जी सर जी, यस। Perfect. ठीक है ना? जी सर। Perfect. तो क्या मैं अभी रोक दूं? हो गया आज के लिए। देखिए, तो हमने क्या सीखा है कि we have learned this one. देखा आपने? First Yeah. tab. So tomorrow, see, again I'm traveling, but tomorrow once I reach the hotel, then we'll have a class around 10 o'clock. Does that time suit you? आप लोगों को चलेगा क्या? इन 10 मॉर्निंग a.m. नहीं, रात में, इवनिंग। चलेगा सर, कोई बात नहीं। अमृता, ओके फॉर Okay. यू? Yeah. Okay, sir. हाँ, क्या So है, 1 hour class. 1 hour क्लास, 1 hour क्लास। और क्या है ना कि अभी थोड़ा Yeah. टैक्स का टाइमिंग है, टैक्सेस है ना, टैक्सेस फाइल करना है, तो थोड़ा उसमें आ रहा है, और बारिश है। अदरवाइज आई वुड हैव रीच्ड, इफ आई लीव से मुंबई अबाउट 5 PM, अगर मैं निकलूँ ना, तो मैं 8:30 बजे पहुँच जाऊँगा। लेकिन बारिश है, तो मुझे लगता है कि 9:30 10 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। वी विल हैव अ क्लास टुमारो 10। ठीक है, तो ये मैं आपको रिकॉर्डेड सेशंस भेज देता हूँ, फिर कल मिलते हैं। Okay, sir. थैंक यू। तो अभी अमृता जी, आपका, आई थिंक अमृता, योर क्वेश्चन दैट आई वांट टू लर्न अबाउट द ट्रेडिंग व्यू, आई थिंक सो दिस इज द स्टेपिंग स्टोन। Yeah. ठीक, Yeah. तो Yeah, आई sir. एम, हाँ, कैन यू सी माय राइटिंग ऑन द वॉल? आई एम राइटिंग ऑन द वॉल, कैन यू सी दिस? आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन, दिख रहा है क्या? जी सर। ठीक। So generally, Amrita, what we were doing earlier, we were teaching the tool first, okay? पहले tool सिखाऊंगा, Mm-hmm. फिर basics of securities market, वो क्या होता है, that I'll be teaching you. Mm. Then the third course is technical analysis, which is a detailed one. और जितना आप Okay. exercise करोगे उतना आप सीखोगे. So more you engaged with me, keep sending as many screenshots, ये ऐसा लग रहा है, वो कर रहा है. The more you engage, fill up a group, because people send it individually. बहुत सारे लोग हैं, so I missed the message, but Mhm. groups help me in that. Technical analysis, then we will learn fundamental analysis, we will learn about इसमें आप RBI का role होगा, सब कुछ, everything that you can think of, and then we'll learn about basics to advanced options. It takes time to teach all this in depth. Some of the content I would want you to review before, वो सब मैं आपको दे दूँ. Second thing I want to give you is practical exposure.
और वो प्रैक्टिकल हम्म, एक्सपोजर कैसे आएगा जब आप खुद वॉच कर रहे हो। तो आपको मैंने अभी प्रैक्टिकल एक्सपोजर में क्या दिया है, मैंने आपको ट्रेंड लाइन वॉच करने के लिए, हैव आई गिवन यू द ट्रेंड लाइंस, है ना? yeah, ट्रेंड लाइन है, विक्स है, इंडिया विक्स दिया है क्या आपको? जी yes sir. ओके, हैव आई आस्क्ड यू टू वॉच इट ऑन बॉलिंजर बैंड? यस सर इसके अलावा मैंने आपको क्या दिया है, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स भी दिया है ना? जी सर करेक्ट और अमृता, हैव आई गिवन यू ऑन मूव डिफरेंट टाइम फ्रेम्स? Yeah. So what happens, generally people pick this up uh, Mm-hmm. at this point in time. They start picking this up at this point in time. But that's, I think, slightly late, which is about Mm-hmm. 1 month from now, or depends on the speed. I don't want you to lose, guys, because why? There's a particular reason. Markets are at lifetime Mm-hmm. high. Okay, that means we are Yeah. expecting some correction at least. There is an Mm-hmm. interest rate Fed की meeting है, interest rate बढ़ाने के लिए on 26th of July. US Fed, जो US का central bank है, US Fed, they have a meeting. So all this is happening at the same time. There's a lot of volatility बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा. I want you to give practical Mm-hmm. experience in this time frame, जो कि बहुत important. So you may think अरे अचानक से कहाँ से आ गया? Why this has come? We have not even started the classes, but ये क्यों? This trend line Mm-hmm. drawing, India Wakes और Bollinger Band आपको उतना कुछ सिखा जाएगा. Otherwise you'll have to wait another 3 months. ये meeting वापस 3 months बाद होगी. So this meeting will happen only after 3 months. Okay. So I Mm-hmm. don't want you to, और उस समय whether Nifty is at a lifetime high, Bank Nifty has a lifetime high, I cannot guarantee that. So we have to do the Okay. practical exposure at the same time. Okay. Thank you and have a good one and God bless you. Bye bye. Thank you sir. Bye. Thank you, G. Take care.